Prime Minister Modi, in a sense, launched his party's election campaign in Uttar Pradesh, where assembly polls will be held early next year. He was in his constituency, Varanasi, where he announced a series of new projects. He also praised the Chief Minister for Uttar Pradesh's handling of the COVID situation, saying it is unmatched, a statement which evokes strong reactions. तो जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। हर हर महादेव। The formal beginning of the BJP's big UP poll journey, 6 months ahead of the prestigious state elections. सभी लोगन के प्रणाम। The PM was on his first visit to his Lok Sabha constituency Varanasi in over 8 months. First time after the deadly COVID pandemic killed thousands in UP. In his constituency alone, the queues at cremation sites and hospitals spoke volumes of the human suffering. The PM had to dispatch trusted aide A.K. Sharma to manage affairs. The rest of UP saw horrifying scenes of floating corpses in rivers, medicine and oxygen shortage. 3 months later, the Prime Minister could now be seen putting all of that behind and praised the Chief Minister for what he feels was exemplary handling of the situation. देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े-बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, वो अभूतपूर्व है। Reactions came in to the Prime Minister's praise of the CM's handling. मेरे समय तो इतनी बुरी हालत स्थिति थी, जैसे लगता है कि प्रशासन न शासन किसी का अंकुश ही नहीं है, न डॉक्टरों पर, न अस्पतालों में, न मरीज का कोई सहयोग नहीं हो रहा था। उसी कार्यकाल में मेरी वाइफ भी कोविड में एक्सपायर भी हो गई। मैं चिल्लाता रहा, डॉक्टरों से बोलता था, लेकिन कोई कहीं से नहीं सहयोग मिला। सच्चाई ये है कि कोविड में बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं मिली। जो लोगों को कोविड होता था वो लोग डर के मारे अपना छिप जाते थे, न कोई टेस्ट, न कोई दवा, न कोई डॉक्टर, बहुत ही परेशानी हुई। Modi unveiled a series of development projects in his constituency, the Rudraksh Convention Centre, upgradation of the BHU hospital, even the Ro-Ro ferry service. आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। Taking a cue, BJP party leaders hit election mode. Office bearers of the BJP met today at the party office in Lucknow on poll strategy. The working committee of the BJP's UP wing will now meet on Friday. National President JP Nadda will be addressing the gathering virtually, with the Chief Minister delivering the closing address. The opposition, which so far has been largely dormant regarding elections, insists this won't alter people's minds. गंगा मैया के क्या हाल हैं? गंगा का किनारा कैसा है? गंगा के तटों पर किस तरीके से कोरोना काल में लाशें दफनाई गईं, फिर उनका कफन नोचा गया, उस पर भी प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। UP goes to polls early next year, and a conscious attempt is being made by the BJP to change the narrative. A series of developmental projects will be inaugurated and unveiled in the next 100 days. But the plan also includes bringing in the discourse around a population control bill. बहुत बहुत धन्यवाद। Bureau Report, NDTV.